It's me. Sorry, didn't mean to startle you. Where am I? Back east of the tar belt. Your private room. You have Amelie to thank for that. Where is she? We don't know. She didn't head back east? No, but after she saw to you, she contacted HQ and left us a message. Saying what? I'm going to finish what Bridget started. Just that, and then... gone. Bridget. I saw Bridget on the beach. Sam, please. You yourself burned her body, remember? She wouldn't have remained on the beach. Couldn't have. Not even if it was her daughter's beach. Check the logs. You've got them, don't you? Sorry. We didn't get any of it. The only record we have is the one in your head. What else do you remember? That guy was there too. Cliff. He took Die Hardman hostage. The director? That part you believe? Well, it would explain why we haven't heard from him for so long. I always suspected him. But now I'm starting to piece together a different narrative. Something's been bothering me, you see. We've been operating on the assumption that Higgs was controlling Cliff. But that can't possibly be correct. Because Higgs is gone, and Cliff is still causing trouble. You think Cliff is the mastermind? Yes. He's likely holding Amelie and the director captive on the beach. And that's where I'm going. Wait a minute. Where's Fragile? She's safe here with us. But so long as you're over there, she won't be able to send you to the beach. What? You must understand, Sam. While you were unconscious, the situation changed quite a bit. We'll explain everything, I promise. But first, you should rest. All right? Fuck rest. I'm going back to that beach. And little Lou doesn't need a break either, I take it? Sam, you helped us extend the chiral network from coast to coast. And you dealt with Higgs, the UCA's enemy #1. We couldn't have come this far without you. But there is still one final step. We have to swear in a new president and establish a functioning government. Only then will America be whole again. Why don't you save that shit for someone who cares? I've done my part. Fuck America. We've got bigger problems now. I hear you, Sam. Government is the least of our concerns at this point. Cliff has Amelie, which means there may not be anything left to govern come tomorrow. If tomorrow comes at all. Then why aren't we out there doing something about it? I don't care what she is, only that we get her back. Right you are. Rescuing Amelie and averting the 6th extinction are one and the same. But neither will be possible unless you first come back east. We are in no position to give you orders, of course. But believe me when I say, it is the only way. Sam, everyone's here but you. Fragile transported us back to headquarters. You okay? Never been better. Oh. Delivering so many people in such a short amount of time is new. Mama. No, Lochner. Yeah, I'm here too. Figured I should lend a hand. We're all waiting for you, Sam. Episode 10 Die Hardman.
अभी तक होता ही आया है कि कोई ना कोई कार्गो हमें मिला है, हम यहाँ से लेके वहाँ गए हैं, डिलीवर किया, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कार्गो मैं खुद हूँ, मुझे लेके जाना है खुद को बहुत दूर। अब तक का सबसे मतलब लॉन्गेस्ट रन होगा हमारा जो अब करने वाले हैं हम। अब कर रहे हैं एक्चुअली, करने क्या वाले हैं, मैं उस पर ही हूँ। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ पे और मैं मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पे हूँ, इस जगह से निकला हूँ और मुझे यहाँ आना है, ये यहाँ पे। सो ये रास्ता आपको याद होगा जब कहानी हमारी आरंभ हुई थी, हमने यहीं से स्टार्ट किया था और अभी पूरा ये एरिया में पार करना है। रीज़न ये है कि फ्रेजाइल की हालत बहुत ख़राब है और हम जंप नहीं कर सकते। और अगर मुझे वापस उस कहानी को जो आपने पिछले एपिसोड में देखा उसे आरंभ करना है, उसे तो वापस बीच पर जाना पड़ेगा और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है बीच पर जाने की। तो रास्ता उस टाइम बहुत छोटा लग रहा था, बहुत दूर है, बहुत दूर है ये। तो मैं क्या सोच रहा था कि एक बार इस जगह पहुंच जाए ऐसी सतह पे तो फिर जाना आसान होगा। तो मैं रूट जो प्लॉट कर रहा हूँ कुछ ऐसा है कि सीधा सीधा लेके जाते हैं, गिरते पड़ते निकलेंगे किसी तरह से, यहाँ पहुँच जाएं एक बार ये यहाँ पे, तो फिर यहाँ से रास्ता आसान होगा। लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। 2-3 रूट में बना देता हूँ ताकि पता रहे मुझे कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। 1 मिनट, ओके, ये एक बार यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ से हम आगे की ओर निकलेंगे और फ्रेजाइल से मिलेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बीच पे, जहाँ पिछली कहानी आपने जो देखी थी, हम उसको आगे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जहाँ हमें कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डाउट है कि ब्रिजेट वहाँ कैसे पहुँच गई अगर मर चुकी है तो, और एमिली कहाँ गई, काफ़ी सारे सवाल हैं। बट एक बार यहाँ से निकले फिर बात करता हूँ ना। चलिए, नमस्कार देवियों और सज्जनों, माय डियर दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं डेथ स्ट्रैंडिंग का अगला एपिसोड। रास्ते में जगह ये चीज़ें बहुत मिलेंगी अब तो, क्योंकि आपको पता ही है हमने पूरा जितना एरिया था सब कार नेटवर्क से जोड़ दिया है। तो हमें जितने भी प्लेयर्स अब तक चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे, इवन मैंने खुद बनाई है, जो अब हर चीज़ दिखेगी, चाहे वो सेफ हाउस हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे आपका वो जहाँ कुछ देर के लिए हम रेस्ट करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला टाइम फॉल शेल्टर हो, तो ये हर चीज़ दिखाई देगा, सेफ हाउस, सब कुछ, एवरीथिंग। तो मैं इसको आराम आराम से रुकते रुकते रिलैक्स करते हुए जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। Come on now.
बस थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और। चलो बैक बेबी, कम ऑन ना। इतना वक्त नहीं है, रुक के सोचो मत वहां पे। ये रहा। मुझे लगा बाइक डूब गई मेरी। बस आगे आगे हो गया काम, बस चलो अब कहीं नहीं मुड़ना, कहीं नहीं जाना, सीधा रास्ता है, निकल लो यार। लेकिन एक बात है कि मौसम यहाँ बहुत खराब हो चुका है पहले से, देख रहे हो आप। Hey, Sam, I see you're coming up on Lake Knot. या मैन। Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last Stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find.
भी तैयारी से बढ़ रहा है मेरी तरफ, मुझे भी तैयार रहना चाहिए। मेरे पास पिस्तौल है यार, वो भी उस पर असर करेगा नहीं शायद। हाँ ये रहा है, या बेबी, अब आएगा ना मजा। मैं काम करो, जो ये है इसको ड्रॉप करो, पहले इसको हटाओ, इसको पकड़ो। BB! Throwing fire, retreat! भाग गया बदतमीज। एक मिनट रुक जाओ। सुखचैन साहब बहुत गलत टाइम पे फोन कर रहे हैं आप। सुखचैन साहब बहुत गलत टाइम फोन किया आपने। हेलो सुखचैन साहब। क्या हो गया? हाँ बोलिए सुखचैन साहब। आ रहे हो तुम वैलो में? सुखचैन साहब फाइट कर रहा हूँ मैं अभी डेथ स्ट्रैंडिंग में। अरे अभी तक भाभी यहीं पे? भाभी? अच्छा ने बोला फाइट कर रहे हो? अरे भाभी से कैसी बदतमीज। सुखचैन साहब रिकॉर्ड हो रहा है ये बात बता रहा हूँ मैं। ओके ओके, कितना टाइम लगेगा अभी? बस एक विलन है उसको हरा के आ रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? आई थिंक हाँ जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो। बदतमीजी मत करिए सुखचैन साहब, बदतमीज हो गया। मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में मैक्सिमम लगेगा इतना ही। ओके कमाल करता है ऐसे एक इंसान है ना ये, बहुत मोहब्बत करता हूँ इनसे वैसे, बताऊँ मैं आपको सच में। चलो चलिए लेट्स गो। अरे एक मिनट रुको, मैं कह रहा था कि ब्लड बैग को ये खत्म हो गया, इसको हटा दो ना। कौन सा था? हाँ ये वाला, इसको ड्रॉप करो। बट मुझे और चाहिए होगा अगर मैं फाइट करना चाहता हूँ तो। I'm sorry. Get my baby. यार एक बात बताओ, अगर मैं उससे फाइट करूँ तो एंटी बीटी वेपन्स क्यों यूज करूँ? नॉर्मल क्यों नहीं यूज कर सकता? ये वाले इससे नहीं मरेगा वो? ट्राई कर देखता। ओह यस बेबी, रिलैक्स, दैट्स राइट। हम एंटी वाला क्यों यूज करेंगे? ये बीटी थोड़ी ना है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। गन निकालो बदतमीज, गन निकालो। खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी। कौन था ये? शिट, बहुत ज्यादा सारी हेल्थ ले गए तो एक बार में। किसी ने मारा बहुत खतरनाक तरीके से, पता नहीं कहां से पड़ी। ये क्या सामने? ब्लड बैग, आर्मर प्लेट यार ले लेता हूँ यार। आ जाओ। मैंने कभी यूज नहीं किया है क्योंकि इसके थोड़ा सा स्पीड कम होती है। बट ब्लड बैग एम्प्टी। शिट
आर्मर प्लेट का गाइस एक सेकंड रुकना प्लीज ना आर्मर प्लेट वो अटैच क्यों ये यूज नहीं हो सकता अपने आप पड़ा रहेगा यूं ही अटैच कैरी बाय हैंड ऑफ लोड क्या मतलब है इसका आर्मर प्लेट एडिशन टू ऑब्जर्व बुलेट्स प्लेट्स कैन आल्सो गो टू प्रिंसिपल अच्छा ठीक है असॉल्ट राइफल लेवल 3 इसमें एमओ 30 है इसमें ठीक है इसमें भी है और इसमें तीनों में लगभग बुलेट्स हैं ठीक इनको रखो और ह्यूमैनिटी ग्रेनेड रहने दो कोई बात नहीं ये रहने दो पावर ग्लव्स रहने दो ब्रिजेस बूट रहने दो ठीक है ब्लड बैग सामने है मैन रन यार My dear. Open fire. ओपन फायर कहाँ से Light him up. Shit. Move, baby, move. वेट हटाओ इसको इधर ही कहीं भागा है ये We need reinforcements. Move. ये इसका अपना बीच है ना तो इसलिए ये यहाँ पे पर देखिए जरा गया कहाँ है
Where's my baby? ये रहे. Get my baby. Tango! ब्लड लेवल बहुत कम है. आराम से रुक जाओ अभी शूट मत करना. फाइट किया तो मारे जाएंगे. एक मिनट रुको, पहले गन चेंज करो. ये नहीं, ये लगाओ. ये रहा. डाउन. Oh boy. 2-3 गोलियां पड़ती मैं मरा था. अब तो इसके बाद Baby, we're getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you clear of hunger? Who are you? Are you the father? They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. मुझे डाउट था इस बारे में बहुत पहले से. मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ. मैं लग रहा है कि यही हो सकता है. मैंने बोला नहीं था उस वक्त, लेकिन ये सच है. सैम इसका बेटा है, क्लिफ का. वो जो बीबी की ओर इशारा किया गया था, वो इशारा बीबी हमारे बीबी का नहीं था, ये सैम की ओर था.
स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को नहीं सैम को खोज रहा है। सैम के फादर है ये। अब पूरी कहानी क्लियर हो रही है। यानी कि ब्रिजेस जो कंपनी है उन्होंने इसका जो बेबी लिया था, वो बेबी जो बीबी करके था, वो बेबी कोई और नहीं था, वो सैम था। Oh boy. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Connection law. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. Nah, man. Give me back my BB. Nah, man. Impossible. Cliff was born. He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. यही एक चीज है जो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज Funny कर you रही है कि should ये say कहानी that. क्या है. I've got something you should see. What? Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." अगर मैं वापस नहीं आया तो ये डायरेक्टर के बीच में और क्लिफ के बीच में कुछ एक कहानी है, इतिहास जो हमें क्लियर नहीं है और इसलिए पता नहीं कि सैम कैसे. All right. This message is insurance in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Oh, he's all right. उसने तो कहा था कि जला हुआ चेहरा इसलिए मास्क. Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you?
Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her. ये बात तो है यार. The original team we sent was वेट, अब तक जब भी एमिली से मुलाकात हुई है तो मेरे साथ बीचेस पे ही हुई है. रियल में तो कभी उससे ऐसे मिले नहीं हम ना. याद करो एक बार. हाँ, नहीं आ रहा कि रियल में कभी उससे मुलाकात ऐसे हुई हो तो. खैर. divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge North City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. On the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There her ka remained, though her ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you want... मतलब एमिली का जन्म बीच पर हुआ था और उसकी बॉडी तो यहाँ पे है बट उसकी आत्मा वहीं रह गई, इसलिए बहुत कमज़ोर थी. ये कहना चाहते हैं ये हाँ और का के बारे में. खैर अभी सुनते हैं. बहुत कुछ है मुझे बोलना, अभी तो बहुत कम बात कर पाया हूँ आपसे. If you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. Oh. You see, doesn't add up, वो does it? माँ नहीं बन सकती और There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. बहुत सारे उलझन. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. Episode 12. After he Bridges. recorded this,
the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. देव और सुखचैन, अगर तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही है तो बस मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, बस ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जहाँ मुझ के यहाँ पे ऐड करता कि तुम लोग लगे पता रहे कि हाँ मैं आ गया हूँ। बस एक सेकंड, इसको फिर रैप अप कर दो, फिर आ रहा हूँ। तुम लोग, तुम्हारी आवाज़ मुझे नहीं आएगी, बस एक सेकंड रुकना ना, ये एंड हो रहा है बस। He had a gun under Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What happened? The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void outs, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power? Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. इसका मतलब उनके पास कोई बीबी स्टार्टिंग से था ही नहीं। वो जो भी यूज़ कर रहे थे वो एमिली के पावर पे काम कर रहे थे। और फाइनली यहाँ पे आने के बाद, और रीज़न शायद यही सच भी था, क्योंकि जब एमिली ने हमें ये बोला कि सारा जितना भी यहाँ पे टर्मिनल उन्हें कनेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं वो अपना एजेंडा पूरा कर रही थी, जो ई का था, एक्सटिंक्शन एंटिटी वाला, जो फाइनली जाके उस पड़ाव पे सारा तबाही लाएगा और ऑल। फिलहाल इसे कंटिन्यू करते हैं। Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director, all three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. और एमिली ने कहा भी था कि अगर कोई मुझे रोक सकता है तो वो तुम ही हो, कोई और नहीं। Boy, oh boy. खैर आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं यार। कहानी बहुत उलझी हुई सी लग रही है आपको, लेकिन सीधी सीधी सी है। सॉल्व हो जाएगी एक बार जब एमिली से मुलाकात होकर हमें क्लियर हो एक्चुअल में कौन है। बट ये बात सही है कि हाँ ई वही है। और एक मिनट इनको बोलने दो पहले। There's a chance her soul might become stranded on the beach. So, ओके,
अब इससे पहले कि नया ऑर्डर हम ले और बीच पे जाए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात क्लिफ की है तो एक बात तो क्लियर हो गई, जिस तरह उसने गले लगाया था और हमसे वहाँ बातें की थी, क्लियरली वो कहानी बहुत पहले ही सुलझ गई थी। जहाँ पे बात हुई थी बीबी की और बार बार इशारा कर रहा था उसको उसका बच्चा चाहिए, वो हमारे BB-28 की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हुई और उसके हिसाब से ये बच्चा ये इतना छोटा नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं वो हमारी एज का रहा होगा। खैर, कहानी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे खुल के अगले एपिसोड में करूंगा, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुका है। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।